हेलो। मैं डॉक्टर मागी हूँ। जैसे मैंने पहले भी वीडियो बनाए थे, मैंने इनफर्टिलिटी के बारे में, जिसको बहुत से लोगों को बच्चे भी हुए थे, उसको वो वीडियो भी डाला हूँ मैं। तो आज मैं जिस चीज़ पे बात कर रहा हूँ वो है स्पर्म काउंट के लिए बात कर रहा हूँ। जो मेल इनफर्टिलिटी का मेन रीज़न है, जो जिसकी वजह से बच्चे नहीं हो रहे हैं, वो एक रीज़न है स्पर्म काउंट। स्पर्म काउंट के बारे में आज मैं इन डिटेल बताऊंगा क्यों बच्चे नहीं हो रहे, ड्यू टू मेल कॉज। आदमी आदमी से बच्चे क्यों नहीं हो रहे, मेल कॉज के रीजंस क्या है, स्पर्म काउंट के नॉर्मल काउंट क्या है, फिर उसके बारे में बताऊंगा मैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, मैं मेरे यूट्यूब चैनल के बारे में बताऊंगा, जो डॉक्टर मागीज इनफर्टिलिटी एंड डायबिटिक क्लिनिक है। वो मेरा यूट्यूब चैनल है, जिसमें मैंने इनफर्टिलिटी जो पेशेंट को बच्चे हैं उसके बारे में बताया हूँ, और कॉजेस ऑफ इनफर्टिलिटी जो पीसीओएस और पीसीओडी के बारे में बात किया हूँ मैं। तो उसका भी एक रीज़न है जिसके लिए फीमेल इनफर्टिलिटी के लिए बात कर चुका हूँ मैं, पीसीओएस और पीसीओडी। एंड डिस्मेनोरिया के बारे में बात करता हूँ, जो पीरियड्स में पेट दुख के भी थोड़े लोगों को बच्चे नहीं हो रहे। तो उसके लिए भी इनफर्टिलिटी की वो जो रीजंस हैं उसमें मैं प्रीवियस वीडियोस में इन डॉक्टर मागीज इनफर्टिलिटी एंड डायबिटिक क्लिनिक में बात कर चुका हूँ। और मेरा सेल नंबर है 9448210446। सो इस मुझे जो भी इस रीज़न है जिसको इनफर्टिलिटी नहीं है, वो लोग मुझे बात कर सकते हैं इस मोबाइल नंबर पे। और जितना हो सके इतना शेयर करो, क्योंकि इस ये मैं जो भी टॉपिक बात कर रहा हूँ इनफर्टिलिटी के बारे में, तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करो, ताकि हर एक को पहुँचे ये कि रीज़न्स क्या है इनफर्टिलिटी के लिए। और बहुत से लोग मुझे कांटेक्ट करते हैं, फिर उसके बाद बिकॉज़ ऑफ सर्टेन रीज़न्स आईवीआई और आईवीएफ से पहले मुझे कांटेक्ट करने बोल रहा हूँ। मैं 100% एश्योरेंस दे रहा हूँ कि आपको इनफर्टिलिटी जिसकी भी रीज़न है, उसको फर्टाइल होने की मेरी दवाई से बहुत से लोगों को हो चुके हैं बच्चे, और उसका वीडियो भी डाला हूँ मैं। और जब भी आप ये वीडियो देख रहे हैं, इसको बहुत से लोगों को शेयर करो, क्योंकि इससे फ़ायदा भी पहुँचे। अभी मैं आ रहा हूँ स्पर्म काउंट के लिए। नॉर्मल स्पर्म काउंट इन मेन है मोर देन 15 लैक्स पर मिली यूनिट्स में आता है वो। एंड मोर लेस 200 मिलियंस भी जाता है, 15 मिलियंस के ऊपर और 200 मिलियंस के ऊपर जो भी है, तो वो नॉर्मल स्पर्म काउंट रहता है आदमियों में। लेस देन 15 मिलियन स्पर्म काउंट है, तो है ऑलिगोस्पर्मिया। तो स्पर्म्स में देखो, ऑलिगोस्पर्मिया है, एजोस्पर्मिया है, ऑलिगोस्टेराटोजोस्पर्मिया है। तो ये रीजंस क्या है, इसमें क्या है, एजोस्पर्मिया में टोटली स्पर्म्स नहीं है, और जिसमें तो एजोस्पर्मिया के कॉजेस मैकेनिकल हो सकते हैं। जब भी आप अल्ट्रासाउंड करेंगे टेस्टिस का, उसमें पता चलेगा कि ब्लॉकेज कहाँ है। तो उससे हो सकता है कि टोटली स्पर्म काउंट डिफेक्टिव आते रहते हैं। कभी कभी जेनेटिक डिसऑर्डर भी हो सकता है, कभी ऑटो इम्यून डिसऑर्डर भी हो सकता है जहाँ पर एजोस्पर्मिया है। तो वो कॉज देख के वी ट्रीट अकॉर्डिंगली। तो एजोस्पर्मिया तो हो गया। ऑलिगोस्पर्मिया होने के रीज़न क्या है, जिसमें स्पर्म काउंट बहुत कम रहता है? उसके रीजंस हैं कि फूड इनटेक बराबर नहीं है, ज़्यादा टोबैको च्यूइंग है, स्मोकिंग है, और स्ट्रेस कंडीशंस हैं। इसमें क्या होता है, एजोस्पर्मिया रहता है, जिसमें स्पर्म काउंट कम रहता है। अभी ऑलिगोस टेराटोजोस्पर्मिया बोल के जिसके बारे में बात कर रहा हूँ, इसमें ना स्पर्म काउंट तो कम रहता ही है। उसके अलावा इसमें क्या होता है कि मोटिलिटी कम रहती है। उसके उसके अंदर फुल स्पर्म्स में बॉडी है तो टेल नहीं है, टेल है तो हेड नहीं है। तो ये भी हो सकता है इसमें। तो ये इस कंडीशन में ऑलिगोस्थैनोटेराटोजोस्पर्मिया में, तो इसमें मोटिलिटी बहुत कम रहती है, और फुल फुल स्पर्म भी नहीं रहता, उसकी वजह से भी बच्चे नहीं होते हैं। ये सब कंडीशंस के अंदर मैं देख के बहुत से लोगों को, इसको भी मैं स्पर्म कंडीशन के लिए भी दवाई दे चुका हूँ, और बहुत से लोग रिस्पॉन्ड भी कर चुके हैं इसको, जो भी हैं। तो बिफोर आप आईवीएफ ये करने से पहले, स्पर्म लेके डिकोड करने से पहले एग में, तो आप ये दवाई लेके भी स्पर्म के, जैसे मैं और लेडीज़ को भी दे रहा हूँ, स्पर्म्स के लिए भी दवाई दे चुका हूँ। तो इसीलिए मैं स्पर्म्स के लिए भी बोल रहा हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये आप करने से पहले स्पर्म जब काउंट करते हैं, तो अपने आप को अल्कोहल विड्रॉल कीजिए, स्मोकिंग कम कीजिए, टोबैको च्यूइंग कम कीजिए। फिर उसके बाद अगर किसी को डायबिटीज़ है, तो वन ऑफ द रीज़न डायबिटीज़ भी है, डायबिटिक टाइट कंट्रोल शुगर भी कीजिए। इसके बाद उसके साथ है वीडीआर, इन्फेक्ट जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज़ में भी बहुत से लोगों को है, इसमें भी आप उसको ट्रीट करेंगे तो भी स्पर्म काउंट हो जाएगा। उसके साथ मैं दवाई भी देता हूँ, जो बहुत से लोगों को स्पर्म काउंट ठीक हो चुका है। ಟೇಕ್ ಕೇರ್. ನಾನೀಗ ಕನ್ನಡನಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಮ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಈಗ ನಾನು ಹಿಂದಿನಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದೆ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ. ಈಗ ನಾನು ಕನ್ನಡನಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಮ್ ಕೌಂಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಸ್ಪರ್ಮ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ರೀಸನ್ ಇದೆ ಮಕ್ಕಳು ಆಗಲಾರ್ದಕ್ಕೆ. ಗಂಡಸರಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ ಸ್ಪರ್ಮ್ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ, ಆವಾಗ ಇನ್ಫರ್ಟಿಲಿಟಿ ತುಂಬ ಜನರಿಗಿದೆ.
ಇದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚಿತವಾಗಿನ ಇನ್ಫರ್ಟಿಲಿಟಿ ಇನ್ ಫೀಮೇಲ್ಸ್ ಹೇಳಿದ್ದೆ, ಪಿ ಸಿ ಒ ಎಸ್, ಪಿ ಸಿ ಒ ಡಿ ಜನಿಗೆ ಭಾಳ ಜನರಿಗೆ ಔಷಧ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ, ಅದರಿಂದ ಮಕ್ಕಳಾಗಿದೆ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ ನಂತರ. ಸ್ಪರ್ಮ್ ಕೌಂಟ್ನಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ನಾನು ಭಾಳ ಜನರಿಗೆ ಔಷಧ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಸ್ಪರ್ಮ್ ಕೌಂಟ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗಿದೆ. ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಸ್ಪರ್ಮ್ ಕೌಂಟ್ 15 ಮಿಲಿಯನ್ ಮೇಲೆ ಇರಬೇಕು, 200 ಮಿಲಿಯನ್ ಒಳಗಡೆ ಇರಬೇಕು ಒಂದು ಇಜಾಕ್ಯುಲೇಷನ್ನಲ್ಲಿ. 15 ಮಿಲಿಯನ್ ಕೆಳಗಡೆ ಇದ್ದರೆ ಅದು ಆಲಿಗೋಸ್ಪರ್ಮಿಯಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು, ಅದಕ್ಕಿಂತ ತೆಳಗೆ ಇದ್ದರೆ. ಸೊ ಒಂದು ಕಂಡೀಷನ್ ಆಲಿಗೋಸ್ಪರ್ಮಿಯಾದಿಂದ ಮಕ್ಕಳಾಗೋದಿಲ್ಲ, ಎಜೋಸ್ಪರ್ಮಿಯಾದಿಂದ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಟೆರಾಟೋಸರ್ಸ್ಪರ್ಮಿಯಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ, ಅದೂ ಇದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅಸ್ಥಾನೋಟೆರಾಟೋಸೋಸ್ಪರ್ಮಿಯಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಾನು, ಅದರಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಸ್ಪರ್ಮ್ ಕೌಂಟ್ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ. ಈ 3 ಕಂಡೀಷನ್ನಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದರೆ ಇದು ಎಜೋಸ್ಪರ್ಮಿಯಾನಲ್ಲಿ ಟೋಟ್ಲಿ ಕೌಂಟ್ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಇರುತ್ತೆ ಫೆಲೋಪಿಯನ್ ಇವು ಟೆಸ್ಟಿಸ್ನಲ್ಲಿ. ಆ ಟೆಸ್ಟಿಸ್ನಿಂದ ಏನು ಸ್ಪರ್ಮ್ಸ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದು ಇಜಾಕ್ಯುಲೇಟ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿಂದ ಏನು ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಬ್ಲೋ ಸೋನೋಗ್ರಫಿನಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಅದು, ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಥಿಂಗ್ ಏನಿದೆ ಅಂದರೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಇಂಟೇಕ್, ಸಿಗರೇಟ್ ಸ್ಮೋಕಿಂಗ್, ತಂಬಾಕು ಅಥವಾ ಶುಗರ್, ಡಯಾಬಿಟಿಕ್ ಕಂಡೀಷನ್, ಸ್ಟ್ರೆಸ್, ಆಟೋಇಮ್ಯೂನ್ ಡಿಸಾರ್ಡರ್, ಜೆನೆಟಿಕ್ ಡಿಸಾರ್ಡರ್ ಕೂಡ ಸ್ಪರ್ಮ್ ಕೌಂಟ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಒಂದು ಆಲಿಗೋ ಅಸ್ಥಾನೋ ಟೆರಾಟೋಸೋಸ್ಪರ್ಮಿಯಾನಲ್ಲಿ ಮೊಟಿಲಿಟಿ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ, ಸ್ಪರ್ಮ್ ಕೌಂಟ್ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ, ಅದರಿಂದ ಕೂಡ ಮಕ್ಕಳಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಈ 3-4 ಕಂಡೀಷನ್ನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಾನು ಆಯುರ್ವೇದಿಕ್ ಭಾಳ ಮಂದಿಗೆ ಔಷಧ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಅದರಿಂದ ತುಂಬ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ರೇಟ್ ಇದೆ. ಸೊ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ನಾನು ಇದು ಪ್ರಿಕಾಷನ್ ಫಸ್ಟ್ ಇದೆಲ್ಲ ಮಾಡೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆವಾಗಿ ನೀವು ಸ್ಪರ್ಮ್ ಕೌಂಟ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ನನಗೆ ಹೇಳಿ, ನಾನು ಅದರಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಯಾವ ಔಷಧ ತೊಗೋಬೇಕಂತ ಹೇಳಿ. ಸೆಕೆಂಡ್, ನೀವು ಸ್ಮೋಕಿಂಗ್ ಬಂದ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಟೈಟ್ ಶುಗರ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇದಿಷ್ಟು ಏನು ಈಗ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ, ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ಸ್ ಇದೆ ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ. ಸೊ ಹಾಟ್ ವಾಟರ್ ನೀರು ತೊಗೋಬಾರ್ದು, ಜಾಸ್ತಿ ಕುಂದ್ರಬಾರ್ದು, ವಾಕಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಸನ್ಲೈಟ್ನಲ್ಲಿ, ವೆಜಿಟೇಬಲ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ತೊಗೊಳ್ಳಿ, ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ತೊಗೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಇದರಿಂದ ಕೂಡ ಸ್ಪರ್ಮ್ ಕೌಂಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ರೀಸನ್ ಈ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ರೀಸನ್ ಇದೆ ಇದರಲ್ಲಿ. ಸೊ ಏನಾದರೂ ನಿಮ್ಮ ಸ್ಪರ್ಮ್ ಕೌಂಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಏನಾದರೂ ನಿಮ್ಮ ಕಡೆ ಇದ್ದರೆ ಅದು ಕಳಿಸಿ, ನಾನು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ. ನನ್ನ ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬರ್ 9448210446 ಇದೆ. ನನ್ನ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಈ ಚಾನೆಲ್ ಇದೆ, ಡಾಕ್ಟರ್ ಮಾಗೀಸ್ ಇನ್ಫರ್ಟಿಲಿಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಯಾಬಿಟಿಕ್ ಕ್ಲಿನಿಕ್. ಅದು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ನಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ನಾನು ಇದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಭಾಳ ಕೇಸಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಇನ್ಫರ್ಟಿಲಿಟಿ ಇನ್ ಫೀಮೇಲ್ಸ್, ಪಿ ಸಿ ಒ ಎಸ್, ಪಿ ಸಿ ಒಡಿದಿಂದ ತುಂಬ ಜನರಿಗೆ ಮಕ್ಕಳಾಗಿದೆ. ಸೊ ಈಗ ನಾನು ಸ್ಪರ್ಮ್ ಬಗ್ಗೆ ಇವತ್ತು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸ್ಪರ್ಮ್ ಯಾವ್ಯಾವ ಕಂಡೀಷನ್ನಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಮಕ್ಕಳಾಗೋದಿಲ್ಲ, ಮೇಲ್ ಇನ್ಫರ್ಟಿಲಿಟಿ, ಮೇಲ್ ಕಾಸ್ ಇನ್ಫರ್ಟಿಲಿಟಿಗೆ ಅಂದರೆ ಸ್ಪರ್ಮ್ ಬಗ್ಗೆ ಇದನ್ನು ಇವತ್ತು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಓಕೆ, ಹಲೋ, ಐ ಆಮ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮಾಗಿ. I have spoken just now in Kannada and Hindi as well. So now today I am speaking about sperm count in men, due to which there is infertility in couples. So usually why male infertility is because of less sperm count, which is called as oligospermia. Less than 50 million sperms are there, then it is called as oligospermia. Usually normal sperm count should be more than 15 millions, and below 200 million should be. If that is the case, if sperms are normal, then if infertility is still is there with you, it is not because of sperms. It is in case of females it is there. So where I have treated in case of PCOS and PCOD, and weight gain is there, weight loss I will make them, then I give them medicine for females as well. Now I'm speaking about only about sperm. So oligospermia is one of the reason to not to conceive. Second thing, oligoteratospermia is the second reason. Another reason, azoospermia. These are the condition where in azoospermia there are totally nil sperms are there. It is because of this spermatic block is there, due to which there is no sperm flow from the testis to the penis, and whenever ejaculation is there after sexual intercourse, that will be the one of the reason there is no totally sperms are zero. So one of the reason is that in that case we ask the patients to do for ultrasound, we ask to do. Then other tests are there, blood sugar and other whatever testosterone, we ask them to do other tests as well. So another condition is oligospermia, wherein there is low sperm count. Motility is okay, but sperm count is very less. So in that case oligospermia is there. Due to oligospermia there are many conditions I have told you. One is genetic disorder, one is due to blood sugar, another is due to genetic disorder. Third is due to stress conditions or unhygienic, you one lot of drinks, boozing, and so another thing is lot of smoking, tobacco chewing. These are another conditions where sperm count becomes very less.
For this, I have told I am after seeing the reports, I have treated many patients with low sperm counts also, and results are very good. So whoever sees this video, you can contact me on mobile number 9448210446. My YouTube channel is Dr. Magi's Infertility and Diabetic Clinic, wherein you can go and see what all reasons I have spoken about the infertility, what medicines I have given, how many people have been got issues therein I have spoken. Today I am speaking specifically about sperms. What are the conditions where why the sperms are coming down? Why there is infertility because of men? So please, any query, just you can ask me on my cell number, and you can contact my. You can see my YouTube channel as well. So please see this video and please circulate to many people so that why this sperm count has come down, for which I treat for many people. So let many people see this YouTube channel and let them ask me questions. Here I am sitting to answer their queries. Even I, if possible, I'll definitely treat those low sperm count people. I'll let it be oligospermia. So for them also, we can try and treat them. Okay, take care. Bye.